Hello, my dear students. Welcome to the Slate class of Physics A levels. In this class, we will do a practical of physics, and as you can see from the apparatus, this practical is all about electricity, right? Generally, students have a lot of confusion setting up the apparatus. Even some students don't know about the apparatus that we are using here, right? So, in this practical, I have selected an easy one for you. I will familiarize you all with these apparatus, right? ये सारा कुछ मेरे पास क्या है और फिर हम एक प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे. इन दिस प्रैक्टिकल इज May June 2007 paper 3-1, right? So here we have a battery. In fact, 3 cells have been connected in series. This is 1.5 volt cell, 1.5 volt cells and 1.5 volt cells. And as you know that in series EMFs are always added. So theoretically this battery has voltage of 3 times 1.5, that is 4.5 volts. याद रहे कि प्रैक्टिकली ये वोल्टेज थोड़ी सी वेरी हो सकती है. देन वी हैव दीज कनेक्टिंग लीड्स, राइट? हमारे पास इस वक्त 4 कनेक्टिंग लीड्स हैं, ठीक है, और इसको हम सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज करेंगे. द क्लिप एट इट्स एंड इज कॉल्ड crocodile clip because its face is like a face of crocodile. And then we have this switch, right? जब हम इसको नॉब को इसके अंदर प्लग इन करेंगे तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा बिकॉज ये मेटल स्ट्रिप और ये मेटल स्ट्रिप जो है वो इस मेटल कॉन्टैक्ट के थ्रू कंप्लीट इन कॉन्टैक्ट आ जाएंगी. लेकिन जब हम इसको पुल आउट कर देंगे सो दिस इज आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज ओपन स्विच एंड दिस इज क्लोज स्विच, राइट? देन वी हैव दिस component holder and right now it is holding a resistor. So right now this is holding a resistor, this is resistor R2, right? This plastic strip is called component holder and और जो component इसने hold किया हुआ है वो resistor है, so that's why for now it is R2. अगर इसके अंदर capacitance को hold करवा दिया so that will be a capacitor, right? So this white plastic strip is component holder and together this is resistor. Then we have this digital multimeter जिसको आप बहुत ध्यान से understand करें. It can be set it on voltage, so this will act as voltmeter. अगर आप इसको यहां पर सेट करेंगे DC A पे, this is DC ammeter. आप इसको यहां पर पे ohms पर भी सेट कर सकते हैं. This value will be measuring resistance, right? अच्छा, अभी आपने इसको 20 volts पर रखा हुआ है और ये by default आपको 20 volts पर सेट होकर मिला है. इसका मतलब ये है right now it's a voltmeter which has a maximum range of 20 volts. It can measure a voltage of 20 volts, right? याद रहे कि आपके एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 4.5 वोल्ट्स है, ये 20 वोल्ट्स को एक्सीड नहीं करेगी. एंड देन यू हैव दिस चेन ऑफ रेजिस्टर, राइट? इस चेन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट? तो हम इस सर्किट को ट्राई करेंगे कंप्लीट करने की. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर की भी पोलैरिटी होती है, right? So this red terminal of voltmeter is positive terminal and this black terminal of voltmeter is always negative terminal. So इस पूरे सिनेरियो में दो चीजों की पोलैरिटी है. बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज लेबल्ड, ठीक है? अगर बैक साइड से देखेंगे तो सेल के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइन लिखा हुआ एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, राइट? सो वी हैव बैटरी ऑफ 4.5 volts. We have these connecting leads, ठीक है? We have this R2, we have switch, we have this chain of resistors, and then we have a voltmeter which can measure a maximum value of 20 volts, right? Let's start reading this paper and solving this paper. So, this question says that in this experiment, you will measure the potential difference across R2 of resistance R2. So basically आपने इस R2 के cross potential difference जो है उसको measure करना है. Connect a circuit as shown in figure 1.1 using one of the chain of resistor. So here you have once again the chain of resistor. आप अपने सर्किट में chain of resistor में से एक single resistor को initially use करेंगे. So we generally start constructing the circuit from the positive terminal. याद रखिएगा बैटरी का longer terminal is the positive terminal, right? अब इस पूरे सिनेरियो में ये स्विच यूज नहीं हो रहा, स्विच यूज नहीं हो रहा तो मैं स्विच को साइड पे रख दूंगा, ठीक है? मैं स्विच यूज नहीं कर रहा. इसका मतलब ये है
कि फिजिकली एग्जाम में हो सकता है कि आपको कुछ सेपरेटस एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया हो जो थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट यूज ही नहीं हो, ठीक है, तो आप उसको बॉदर ना करें, आप उसको साइड पे रख देंगे, ठीक है. नाउ वी हैव टू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग दिस सर्किट एंड वी हैव टू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग दिस सर्किट फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है. And you can see in the diagram that this positive terminal has been connected with one of the resistor which is point X. So you will take either of the connecting lead. मैंने red वाली ली है because generally positive terminal is the red terminal. मैं इसको यहाँ पर connect करूँ, right? And this is being connected to one of the terminal of resistor. याद रहे कि resistor का positive negative नहीं होता. You don't have to bother about the polarity of this resistor. राइट. सो सॉरी फर्स्ट आपके पास यहां पर चेन ऑफ रेजिस्टर में से एक रेजिस्टर है, ठीक है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू R2. वन ऑफ द रेजिस्टर इज इंक्लूडेड इनिशियली एंड दिस वन ऑफ द रेजिस्टर विल बी कनेक्टेड टू R2. राइट, एंड फ्रॉम R2 your circuit is ending at the negative terminal of battery. The shorter terminal of battery is the negative terminal of battery. So we will pick up one more wire and we will connect it with R2 and the other end with the negative terminal of battery. So इस point तक हमने अपनी circuit की series complete कर ली है. Starting from the battery's positive terminal, we have one of the resistor, then we have resistor R2 and it is ending at the negative terminal of battery, right? Now what is left? We are left with this voltmeter. हमने इस voltmeter को connect करना है बच्चों. तो voltmeter को आप diagram में देख सकते हैं कि this voltmeter has been connected across the resistor R2. So voltmeter का positive terminal will be connected to this point and negative terminal will be connected to this point and this positive terminal is the red one. So you will pick up this red wire, ठीक है, और आप इसको फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और you will take this black wire, this black terminal and you will connect it with the black terminal or the second terminal of R2. So here you have a complete circuit. मैं once again आपको ये explain कर देता हूँ. This is battery. Firstly, this is chain of resistors, one of the resistor. Then you have this R2 and this is ending at the negative terminal of battery, right? And you have this voltmeter which is measuring the voltage across R2. ठीक है, so we have connected one of the resistor. He is asking to record the value of potential difference and you can see on your screens that this potential difference is varying between 3.25 and 3.24 or 26. ठीक है, जिन दो extremes के दरमियान ये vary कर रहा है, that voltage is, we will wait until this voltage gets stables. ठीक है, जब ये वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी, द स्टेबल वोल्टेज इज 3.26, ठीक है, बट इट इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन द टू वैल्यूज, ठीक है. सो यहां पर जब मैं वैल्यू इंक्लूड करने लगा हूं, आई विल राइट V1 which is the minimum value of voltage, that was 3.25 and maximum value of voltage during this fluctuation is 3.29. As you can see on your screens, this value is fluctuating between this range. ठीक है, तो ब्लैंक पे कौन सी वोल्टेज लिखेंगे? ब्लैंक पे इस वोल्टेज की एवरेज वैल्यू लिखेंगे. सो द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 3.25 plus 3.29 all divided by 2 and this value is 3.27 volts. याद रहे कि you have to take average of each variable. जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसको एवरेज करेंगे और आप देख सकते हैं कि अपनी स्क्रीन पे आप वोल्ट मीटर जो है ज्यादातर 3.27 वोल्ट्स पर आकर ही स्टेबलाइज हो रहा है. नाउ मूविंग ऑन द टेबल, हियर यू हैव अ टेबल and this says that part B says that change the number n of resistors between point X and point Y. Now this is point X, the first terminal, and this is point Y. Right now इसके दरमियान कितने resistors present हैं? सिर्फ एक. You have to change this resistors, these number of resistors in A2 until you have 6 sets of readings for V and N. You also have to include 1 over V in your table, right? So first column will be for number of readings and you take 6 sets of readings. So I will write 1, 2, 3, 4, 5 and 6 sets of reading.
So first column will be for N, the number of resistors between point X and Y. Then you have voltage V1, voltage V2 in volts, and V average voltage in volts. And there's a last column dedicated for 1 over V because he's asking to include a column for 1 over V. Okay? So in this chain we have 11 resistors. So अगर हम दो के गैप से काम करेंगे, first value will be 1, n is equal to 3, 5, 7, 9 and 11. इसका मतलब ये है कि हम दो के गैप से अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं ताकि फुल रेंज ऑफ रेजिस्टिव वायर कंप्लीट हो जाए. सो फर्स्ट वैल्यू वाज फॉर n इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11. अगर आपकी इसकी लेंथ शॉर्टर होती तो फिर हम एक के गैप से करते. सो फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हैव रिकॉर्डेड रीडिंग्स प्रीवियसली. याद रहे कि आप फर्स्ट पार्ट वाली रीडिंग्स को टेबल में इंक्लूड कर सकते हैं. Those readings were, first value of voltage was 3.25 and the second value of voltage was 3.29, right? You will include these values here, right? So this will be 3.25 volts and 3.29 volts and its average value was 3.27 volts, right? अच्छा, अब जरा आप टेबल में देखें कि हम इसको रियलाइज करें कि इस प्रैक्टिकल में हो क्या रहा है. हो ये रहा है कि जब आप चेन ऑफ रेजिस्टर्स बिटवीन एक्स एंड वाई नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस चेन ऑफ रेजिस्टर इंक्रीज करेंगे बिकॉज दैट हैज रिलेटिवली ग्रेटर रेजिस्टेंस. सो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज रिड्यूस करेगी. व्हाई? बिकॉज इसकी रिलेटिव रेजिस्टेंस रिड्यूस हो रही. सो वोल्ट मीटर रीडिंग विल ऑल्सो रिड्यूस व्हेन यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन चेन, राइट? सो लेट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स. और अब हम इस वोल्ट मीटर पे देखते हैं कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इंक्रीज करने से वोल्ट मीटर रीडिंग को क्या इफेक्ट हो रहा है. असल में तो ये वैल्यू रिड्यूस होनी चाहिए. सो अभी यहां पर एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं. नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर 2 एंड नाउ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर 3. ठीक है, इन तीन रेजिस्टर के क्रॉस मैंने जब लगाया तो आई एम गेटिंग अ स्टेबल वैल्यू ऑन माई वोल्ट मीटर एंड दिस स्टेबल वैल्यू इज 2.51. ठीक है, अगर आपकी स्टेबल वैल्यू आ रही है तो स्टेबल वैल्यू लिख दें, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो दो एक्सट्रीम्स को लिख दें. सो हियर आई विल राइट 2.51 volts. V1 is 2.51 volts and V2 is also 2.51 volts. Right? Now I will increase number of resistors to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Right? So now the value on the voltmeter is fluctuating between 2.03 and 2.04. So 2.03 and 2.04. Right? Now the number of resistors are 7. इस chain of resistor के number of resistors now are 7. ठीक है? And the value of voltage is further reduced now and this value is 1.66 and 1.64 के दरमियान में fluctuations हो रही हैं. So 1.64. Now this value is a bit changing, so I will wait until this value gets stable. Right? Now this value is 1.69 and 1.70. याद रहे कि आपने मेक श्योर करना है कि आपके सारे कनेक्शंस फर्म है, कोई लूज कनेक्शन नहीं है. And you have to wait until this reading gets stable. Now for the fifth value, the number of resistors will be 9. You can count the number of resistors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resistors. For this, the value of voltage is 1.49 and 1.50. Right? So I will write 1.49 and 1.50. And now finally, for the sixth reading, the number of resistors will be 11. मैंने इसको एक्सट्रीम पर कनेक्ट कर दिया. अब चेन ऑफ रेजिस्टर के सारे रेजिस्टर्स इंक्लूड किए. द वैल्यू ऑन द वोल्टमीटर इज 1.31 and 1.32. So I will write 1.31 and 1.32. Now you will calculate the average values. This average value for n is equal to 3 is 2.51. The next one is 2.04. याद रहे कि इसकी एवरेज आ रही है 2.035.
लेकिन आप वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सीड नहीं कर सकते. The range was 2 decimal place. You have to write 2 decimal place reading. The next one will be 1.695 will be written as 1.70, right? And the next value is 1.50 and the last value is 1.32. For the last column, you have to calculate the values of 1 over V, right? So 1 over V, first value is 1 divided by 3.27. This will be 0.306. 0.306. The next value is 1 divided by 2.51. And this is 0.398. 0.398. The next is 1 divided by 2.04. 0.490. 0.490. 1 divided by 1.70 is 0.588. 0.588. 1 divided by 1.5. This value is 0.667. 0.667. And the last value is 1 divided by 1.32. 0.758. 0.758. Now we have a complete table in front of us. In the next part, he is asking us to plot a graph of 1 over V against N. So 1 over V will be plotted along y-axis and N will be plotted along x-axis. So let's move to the graph. So here we are on the graph and the quantity that we have to plot along y-axis is N. So we will label it N. It has no units, तो आपको slash डाल के no units लिखने की ज़रूरत नहीं है, right? Similarly, along y-axis, the quantity is 1 over V and its unit is volts minus 1. So 1 over Vn volts minus 1, right? So along x-axis, the scale is starting from 0 and 1 large block is equal to 2 dVs, right? Along y-axis, 1 over V की values कैसे select की हैं? देखें, 1 over V is varying from 0.306 all the way up to 0.758, right? तो आपको range cover करनी है, so I am starting from the minimum value which is approximately 0.3 and going all the way up to 0.7, right? So मैं आपको ये fifth reading plot करके दिखाता हूँ. Fifth reading में n is equal to 9 के across, the value of 1 over V is 0.667, right? So for n is equal to 9, which is lying somewhere here, the value of 1 over V is 0.667, which will be plotted somewhere here. This is 0.65, this is 0.6, and this is 0.667. ठीक है. अब मैं आपको प्लॉटिंग इस वजह से दिखा रहा हूं ताकि आपको चल जाए कि जब आपने पॉइंट प्लेस करना है तो आपने उसके अराउंड एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करना है. एंड यू विल डूइंग दिस इन एग्जाम विद द प्रैक्टिस, और पेंसिल से करना है आपने इसको एग्जाम में. द लास्ट पॉइंट इज फॉर n इज इक्वल टू 11, द वैल्यू ऑफ 1 over V is 0.758. 0.758. So 0.758 will be plotted somewhere at 0.758 यहाँ पर plot हो. Once again you have to circle this point, and now you are getting this graph, and in this graph all the points are lying very close to the line. So you will pick up a clear ruler. रूलर को आप एग्जाम में लेके जाएंगे और आपने इन पॉइंट्स की बेस्ट फिट लाइन को स्केच करना है, राइट? यू विल स्केच अ बेस्ट फिट लाइन लाइक दिस. सो हियर यू हैव अ बेस्ट फिट लाइन. आपने ये वाला काम भी सारा पेंसिल से करना है. नाउ वी हैव दिस बेस्ट फिट लाइन. इस बेस्ट फिट लाइन से 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे एंड यू विल ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑफ ग्रेडियंट. हमने ये लाइन ड्रॉ ही क्यों की? सो दैट वी कैन फाइंड आउट gradient and y-intercept out of this line, right? For this you can sketch triangle of gradient once again with pencil. ठीक है, मैं यहाँ पर colored pens use कर रहा हूँ, but you have to use pencils बच्चों.
So I am selecting one of this line and the other reference line is this one. आप randomly कोई भी point select कर सकते हैं. मैं इस point को as a reference use कर रहा हूँ. So here we have a triangle of gradient. ठीक है. This coordinate is exactly this one. 2 और उसकी corresponding value है 0.355. Right? The value is 2 against 0.355. Top वाला coordinate देखें. This value of n is 10.8. This value is 10.8 and the corresponding value of 1 over v is 0.75. 0.7. Right? The values are 10.8 and 0.75. So basically we will be using these 2 points to calculate the gradient and y-intercept. याद रहे कि इस केस में y-intercept ग्राफ से नहीं आ सकता because आप यहाँ पर y-intercept को कहीं पर नोट नहीं कर सकते because your graph is not passing through y-axis. Right? Coming back to this part. In this part C, we have plotted graph, we have drawn best fit line. In C3, determine the value of gradient and y-intercept of the graph. So the 2 coordinates that we will use are 2 against 0.355 and the second coordinate is 10.8 against 0.75. Right? You know the formula of gradient? Yes, very easy. Gradient is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Substitute the values. The values are 0.75 minus 0.355 divided by 10.8 minus 2. Put these values in the calculators. So 0.75 minus 0.355 divided by 10.8 minus 2. The gradient is 0.0449. Right? So how you will find the y-intercept? For that you will use this equation of straight line, general equation. Y equals mx plus c. Along y-axis, the quantity is, what we have to use is one of the coordinate. हम ये वाला coordinate select कर रहे हैं. इसका y coordinate कितना है? 0.75. Best fit line का gradient 0.449. X coordinate is 10.8 plus c. So multiplied by 10.8, 0.75 minus answer. Y-intercept is 0.265. Y-intercept is equal to 0.265. So in 3 significant figures, you will write the value of gradient and y-intercept on your blank. So gradient is 0.0449 and y-intercept is 0.265. Right? Gradient is 0.0449 and y-intercept is 0.265. Let's move on to the next part in which you have to do some of more calculations to wind up this paper. So here you have this last part of the paper. लेकिन before that याद रखिए कि gradient का unit होता है. Gradient क्या होता है? Y by x. Y axis पर quantity का क्या unit था? Volts minus 1. और x axis पर quantity का क्या unit था? That was unitless quantity. So gradient का unit है volts minus 1. Right? और y-intercept का क्या unit होगा? जो definitely y-axis का unit, that was once again volts minus 1. So these units are not written with gradient, but इस part में आपको इन units की ज़रूरत है. So in this part, v and n are related by the equation 1 over v equals n times r1 divided by er2 plus 1 over e. Right? Where r1 is the resistor of each of the resistor in the chain and e is the EMF of the cell. You know कि practically इसकी value जो थी, theoretically that value was 4.5 volts. Using your answers from C3, determine the value of E at the ratio R1 by R2. You should include units where appropriate. Right? So,
अगर आप इक्वेशन को देखें, द इक्वेशन इज 1/v इज इक्वल टू n टाइम्स, और n को मैं पहले एज इट इज लिख लेता हूं, nr1 डिवाइडेड बाय er2 प्लस 1/e, राइट? So 1/v is the quantity plotted along y-axis, is equal to r1 divided by er2 multiplied by n. अब मैंने n को सेपरेटली लिखा है, राइट? क्यों लिखा है मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, प्लस 1/v. So this equation is related with the equation of straight line, which is y is equal to mx plus c. So just notice that the quantity we have plotted along x-axis was number of resistors between x, y. Along y-axis, the quantity was 1/v, right? So gradient of this graph is this whole thing, which is r1 divided by er2, and y-intercept is equal to 1/e, right? So how we can find the values of e and r1/r2, as he's saying, using your answers in C3, determine the values of E and ratio R1 by R2. You should include the appropriate units. So, y-intercept say you can get the value of 1/e. What was your y-intercept? Y-intercept was equal to 0.265, right? So, यहां पर आपके पास y intercept किसके इक्वल आ रहा है? Y intercept is equal to 1/e. From here, e is equal to 1/y intercept. ठीक है? E is equal to 1/y intercept. 1 divided by y intercept, which is 0.265. From here, you will get the value of e. So 1 divided by 0.265, the value on my calculator is 3.77. 3.77. Now you have to work out the value of its units. तो आप लिखेंगे unit of E. It is 1/y intercept. Y intercept का क्या unit था? Volts minus 1. So this will become volts. So the value is 3.77 volts. ठीक है? Now you have to work out the value of R1 by ER2. So you know that R1 divided by ER2 is equal to gradient of the graph, right? So we know the gradient of graph, we know the value of E. By substituting these two values, you can find the ratio of R1 and R2. So R1 divided by R2 is equal to gradient multiplied by E, right? Gradient of this graph is 0.0449 and value of E, you have just found this value is 3.77 volts, right? So 0.0449 multiplied by 3.77, this value is 0.169. 0.169. And you have to write its unit. So R1/R2 is equal to gradient multiplied by y-intercept. Sorry, gradient multiplied by E. Gradient का क्या unit था? V minus 1. और E का क्या unit है? Volts. So, V minus 1 multiplied by V raised to power 1. Unit cancel out हो जाएंगे. This will have no unit. Further, you know that this is the ratio of resistances. तो इसका कोई unit नहीं होगा. This will be written as 0.169. आपको bracket में no units लिखने की जरूरत नहीं है. So this is how we complete a question of electricity. And this was a simple question. In the next videos, we will be doing some more practicals and more content related to your A-level. So stay tuned. And जिन लोगों के exams हैं, best of luck for the exams. Thank you.